Good evening to all of you. So last class रे आमे law of torts रो definition and law of torts रे जो व्यक्ति tort commit करथांती सेमानंगटू आमे केमिति compensation लोक पांती से विषय रे आमे पढ़ितिले tort जेतेबेले गोटे जणे लोक commit करे सेटा सब बेले damages आकार रे सेई लोक को दिया जाए जहार किछि लॉस बा क्षति हेतै सो यार रिमेडी होउची damages and this is of two types. One is liquefied and another one is unliquefied. So now we are going to learn what is the difference between a liquefied damage and a non-liquefied damage or unliquefied damage. Liquefied damage रे कौन हुए ना डैमेज टा predetermined that means हमें आगुआ एटा को डिटरमाइन कर परिबा कि केते डैमेज एते दिया जिवो किंतु अनलिक्विफाइड डैमेज रे कौन हुए कि इट इज नॉट predetermined and it depends upon the discretion of the court. टॉर्ट केस रे जो टॉर्ट कमिट हुए कौन जन व्यक्ति द्वारा से केते परिमाण रे डैमेज दिया जीवो डिफेंडेंट केते डैमेज दबो प्लेंटिफ को सेटा कोर्ट डिटरमाइन करिवो एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लॉस सफर्ड बाय दैट पर्सन एट द पॉइंट ऑफ टाइम when the court has to decide that how much damage has to be provided to that person who has suffered loss due to the tort committed by the another person. So it is predetermined hei paribo nahi and kette damage diya jayo that depends upon the discretion of the court. But liquefied damage has nothing to do with the discretion of the court. एथिरे discretion of the court रे किछि जणा न थाए दरकार न थाए कहीं ना प्रीडिटरमाइन होता है केते डैमेज दिया जीवो सेटा ऑलरेडी जणा थाए बट टॉर्ट रे डैमेज टा डिपेंड करे लॉस ऊपर आउ एथिरे इट इज नॉट पॉसिबल टू एसरटेन द क्वांटिटी ऑफ द लॉस बिफोर हैंड केते डैमेज दिया जीवो आपण बिफोर हैंड एटा को जानि परिबेनी कोर्ट तार तर्जमा करिवो यूजिंग द जुडिशियल माइंड कि केते डैमेज हेची आफ्टर दैट ही कोर्ट ए डैमेज को अवार्ड करि परिबा गोटे लोक को सो एबे हमें देखिबा गोटे थ्योरी अछि इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स जे एटा लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स कोटा यार ट्रिक आमे को लॉ ऑफ टॉर्ट कहिबा या लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहिबा जदि आमे एटा को लॉ ऑफ टॉर्ट कहिबा तार माने होची every wrongful act for which there is no justification or excuse to be treated as a tort कौन भी wrongful act जहाँ पे कौन से justification अपन दे परिवेनी then in that case it will be considered as a law of tort but law of torts कौन किछिटा number of specific wrongs थिबो beyond which जदि कौन सी गलती है बा रंग है बा सिविल रंग है कौन सी गोटे लायबिलिटी से अराइज हो पार ना आई मीन गोटे स्पेसिफिक रंग किछिटा डिफाइन हो एंड से रंग भितर ही जदि आपण किछि गोटे रंग कमिट कले देन ओनली यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम बट ता बाहर जदि किछि आपण रंग कमिट कले से स्पेसिफिक स्ट्रेट जैकेट किछि गोटे थिबो किछिटा रंग थिबो ता भितर जदि आपण कमिट कले लायबल हेबे ता बाहर हे गले यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम सो विनफील्ड कहिले कि एटा होचे लॉ ऑफ टॉर्ट दैट मीन्स
every wrongful act for which there is no justification or excuse that will be considered as a law of tort. माने मु जनक घरे पसिगली तांको बिना परमिशन पसिगली तो तांको कोन हला लॉस हला बा डैमेज हला, तो इन दैट केस आई डोंट हैव द जस्टिफिकेशन कि व्हाई आई एंटर्ड द हाउस ऑफ दैट पर्सन without the permission of that person. In such case I have committed a tort which is called as a trespass to the house of that person without the knowledge of that person or permission of that person. In such case I will be held liable under the tort, even if किसी भी गोटे सेमती specifically wrong आगुर एटा define है कि नहीं, but still be I have committed a tort and I will be held liable for the same. But law of torts रे कहिला कि किछटा specific wrong अछि, specific wrong specified way रे अछि. सैलमन कहिले एटा होछि law of torts एंड तांकर जो थियोरीटा एथरे इनक्लूड रहे सेटा को कहा जाए पिजियन होल थियोरी. सो पिजियन होल थियोरी रे सैलमन कहिले किछटा स्पेसिफिक रॉन्ग अछि. The liability under this branch of the law arises only when the wrong is covered by any one or other nominated torts. A specific wrong भितर जदि सेटा आसिला only in that case से person टी liable हबो. जेमति criminal law consists of body of rules establishing specific offences, so the law of torts also consists of body of rules establishing specific injuries. So विभिन्न केसेस आसिला जेमति कि एसबी वर्सेस व्हाइट आसिला, पैस्ले वर्सेस फ्रीमैन आसिला. एथिरे सबु विभिन्न फिलोसोफर्स जो माने थिले बा लीगल ग्रेजुएट्स लीगल पर्सन्स जो माने थिले से माने विभिन्न विभिन्न थ्योरी को सपोर्ट करिया को लागले. किछि जण लॉ ऑफ टॉर्ट को सपोर्ट कले, किछि जण लॉ ऑफ टॉर्ट्स को सपोर्ट कले, बट किछि नुआ नुआ टॉर्ट कमिट हला लोकों को द्वारा जोटा कि से स्पेसिफिक रॉन्ग भितर आसिलानी एंड कोर्ट सेटा को डिसाइड कला. जेमिति कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर गोटे केस थिला जोटा कि कौन से स्पेसिफिक रॉन्ग भितर आसु नथिला किंतु कोर्ट सेटा को डिसाइड कला. सैलमन थ्योरी केबे भी कहिनी कि द कोर्ट इज इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट, बट से कहि कि स्पेसिफिक रॉन्ग भितर आसिले ही जण लायबल हे परिबो. सो विभिन्न प्रकार न्यू टॉर्ट जेमति कि डिसीट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक्सेट्रा आमर इंक्लूड हला टॉर्ट रे. सो ना क्वेश्चन आसुची कि कोन कोटा हमें ठीक बोली कंसीडर करिबा. वी विल कंसीडर लॉ ऑफ टॉर्ट एज ए करेक्ट form of tort or law of torts as a correct form of the tort. तो एठी Winfield made a modification in its stand and told that neither law of tort is incorrect nor law of torts is incorrect. Both are same according to their own representation. But law of tort गोटे broader outlook को include करे and law of torts गोटे नैरो आउटलुक बा पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड करे. सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स नैरो, लॉ ऑफ टॉर्ट ब्रॉड, बट बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्टेक्स्ट. ईच थ्योरी इज करेक्ट फ्रॉम इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू. सो नाइदर लॉ ऑफ टॉर्ट टा गलत ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स गलत, किंतु दी जण जाक करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉन्टेक्स्ट. सो आज आम जानिले टॉर्ट डैमेज केते प्रकार होते, लिक्विफाइड डैमेज और अनलिक्विफाइड डैमेज, एंड टॉर्टा लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स. सो इटा कौन, इट इज द ब्लेंडिंग ऑफ टू लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स दीटा जाक ठीक अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज द डिवॉइड ऑफ नॉन दीटा जाक कोटा भी भूल नुहे. एटा दीटा जाक पढ़ी सारा परे आमे आउटकम पाइले यार. So please subscribe our channel
एटा गोटे श्रीकाया लीगल हब गोटे लॉ बेस्ड चैनल जो चैनल रे आमे विभिन्न लीगल सब्जेक्ट्स को कवर करिवो इन फ्यूचर एंड ए चैनल टी ओडिशावासी हेल्पफुल हम लीगल नॉलेज पाइबा पाई कॉलेज स्टूडेंट्स एवं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करथिबा स्टूडेंट्स मानक हेल्पफुल हम टू जॉइन श्रीकाया लीगल हब प्लीज कॉन्टैक्ट अस इन द नंबर प्रोवाइडेड इन आवर चैनल. Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel Sri Kaya Legal Hub to get law related contents. Thank you for watching.